waking you up to the UAE's conversation. This is Talk Breakfast with Vivek Sunil and Sobia Khan on Talk 100.3. And looking forward to an excellent conversation का सिलसिला with Dr. Rajul Matkar. UAE में एक जाना माना नाम, 30 साल का एक्सपीरियंस को बैकअप किए हुए और हर तरह का सवाल बिल्कुल रेडी लेके हम बैठे हैं. कुछ जो हैं जाहिर है काफ़ी मायने रखते हैं, लोगों को हेल्प करेंगे. एंड कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही चूँकि सवाल पूछना है कभी कभार पूछ भी लेते हैं. बट वेरी हैप्पी टू वेलकम यू in the fourth final hour of Thursday Talk Breakfast. So Dr. Rajul Matkar, specialist obstetrics and gynecologist हमारे साथ 30 साल का एक्सपीरियंस इनका है. अगर आपके पास कोई सवाल 0586861003 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. एंड डॉक्टर राजुल इज फ्रॉम medstar.hc.com पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं medstar मल्टी स्पेशलिटी, या आप उनके हैंडल पे भी जा सकते हैं @Rajul_25. लेकिन ये बाद में जाइएगा, अभी हमारे साथ रहिए बिकॉज मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस मोमेंट विद हर. पता नहीं दोबारा वो आए या ना आए, सो हमारे साथ रहिए और ये बातचीत का सिलसिला होपफुली एंजॉय करेंगे आप. This is Talk Breakfast with Vivek Sunil and Sobia Khan on Talk 100.3. So सक्सेस सिर्फ साल ही नहीं होता, जाहिर है उन सालों में आपने कितनी जान डाल दी है किसी पेशेंट की ज़िंदगी में, वो भी मैटर करता है. व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर राजुल, आपको बता दें कि जहाँ वो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी जानती हैं, वहाँ बगैर जाने किसी लैंग्वेज भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेती हैं. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ यूएई में आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं व्हेन इट कम्स टू द गायनी साइड. ऐसे में शी हैज़ happy patients from Canada, Philippines, Russia, Italy, and उनके testimonials भी हैं MedStar के YouTube चैनल पर. क्या बात है. सो MedStar के YouTube चैनल पे जरूर जाइए. बट डॉक्टर राजुल, सच अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर स्टूडियोज. Thank you so much, Vivek, as well as Sobia. Thank you for having me here and Talk 100.3. I'm very thrilled to be here and mainly to connect with all your listeners. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इधर आपने बुलाया मुझे. आई थिंक ये भी आपके सक्सेस का एक राज है कि आप डरती नहीं हैं कि और आपके फैंस बने और भी लोग जो है वो आपकी ज़िंदगी में जुड़े ताकि आप उनकी ज़िंदगी जो है और बेहतर और हेल्दी बना सकें. सो मुझे जो प्लेजर मिलता है पेशेंट्स से बात करने में या फिर कनेक्शंस बनाने में, यही मुझे सोशल मीडिया पे ले गया है एंड टू अटेंड इवेंट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई फाइंड कि जितने लोग से मैं बात करती हूँ उतनी मेरी लाइफ रिच होती है टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है. सो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. दैट मीन्स सिर्फ एक नोबल प्रोफेशन ही नहीं, यू आर अ लेडी विद अ वेरी वेरी बिग एंड काइंड हार्ट. इट्स अगेन आवर प्लेजर डॉक्टर राजुल. आई थिंक अगर हम आपकी क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो शो एंडलेस है. बट वन क्वालिटी इज दैट शी स्पीक्स इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी. तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एम छो डॉक्टर मजा मा. अच्छा आपने, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी काय म्हणतात अगदी छान. फुल आणि म्हणजे मी मुंबईमधनं आहे, सो मराठीत बोलायला मला काही त्रास नाही होत. अरे सुपर, जय. क्या बात है. अब तो और भी सवाल आएंगे और देर नहीं करनी हमारे लिसनर से. हम ये कहें दिस इज द टाइम, लेडीज अगर हमें सुन रही हैं या वो जेंटलमैन हु हैव लेडीज इन देयर लाइफ एंड कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग एंड दे वांट टू गेट इन टच विद डॉक्टर राजुल, इट्स राइट हियर राइट नाउ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग डॉक्टर राजुल एब्सोल्युटली फ्री. Best things in life are free. Good advice. Radio, absolutely. And रेडियो पे कोई भी सवाल आए they're free. बट क्लिनिक में भी मैं बिल्कुल हिचकती नहीं पेशेंट्स के सवाल आंसर करने के लिए. मैं इनफ टाइम दे देती हूँ पेशेंट को. मुझे 10-10 मिनट में पेशेंट देखना अच्छा नहीं लगता. एंड इसलिए I'm extremely happy at MedStar Aesthetics and Multi-Speciality Center because we have a team that supports this vision. So I love giving time to my patients. एंड अगेन वैसे तो एक ही शख्स जो है वो सामने आता है जब किसी की सक्सेस की बात होती है, लेकिन हम ये याद रखना चाहिए हमें कि देयर इज़ अ बिग टीम वर्किंग बिहाइंड और वो आपकी सक्सेस का हिस्सा. एब्सोल्युटली. मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे नर्सिंग स्टाफ मेरे राइट हैंड है, मेरे फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस मेरे लेफ्ट हैंड है. मैं हमेशा ये बोलती हूँ. एंड व्हेन यू हैव अ मैनेजमेंट दैट सपोर्ट्स एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू, देन आई थिंक यू हैव टू हैव. I think star doctors are all at MedStar time and time again. क्या लाइन बोला आपने सोबिया, mind blowing. I mean it. Now gynecology is such a vast topic, Dr. Rajul.
आज आप बताइए कि हम कौन से ऐसे मीडियम पर जिसकी ज़्यादा आपको लगता है कि लोगों को जानकारी चाहिए होगी एंड यू थिंक वी शुड डिस्कस दैट. सो ऑफ लेट मुझे ऐसा लगता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड यू नो देयर लाइफस्टाइल डिजीजेस जो यहाँ दुबई में बहुत दिखते हैं. PCOS, जी. Yes. So PCOS is a short form of polycystic ovarian सही. syndrome. And lifestyle diseases दिखते हैं because work stress यहाँ इतना ज़्यादा है और यहाँ पे eating habits लोगों की बहुत बुरी है. So obesity बढ़ जाता है and this sort of triggers polycystic ovarian syndrome. It triggers hypothyroidism, मतलब thyroid बरोबर काम नहीं करता. And it triggers a lot of other metabolic diseases also. And then leads to other gynec problems like infertility हो या fibroid हो या endometriosis ho. It's all interrelated. I'm so glad that you touched this topic and I'm so glad that I let you did that because normally हम अपने एक set of questions और उसके साथ सिलसिले के साथ आते हैं, लेकिन आज भी क्या ऐसा ही है कि PCOS के कोई symptoms नहीं है डॉक्टर राजुल, जैसे एक टाइम पे हमने सुना था, and that makes it even more complicated? Yeah, sometimes people don't really know they are suffering from polycystic ovaries. Exactly. मतलब उनको यही पता नहीं चलता. They come with certain signs and symptoms. Like some people may come saying that face पे बाल बढ़ गए हैं या overall body पे बाल बढ़ गए हैं. That's one of the things. Another thing is irregular periods हो गए हैं. Okay. Another thing is people may come and say कि मुझे I'm trying to have a baby and I'm not able to have a baby. So infertility could be one of the ways it may present. Irregular periods. Facial hair. So, and the main thing to understand is that weight gain इसके साथ रहता है कोई लोग को और किसी को weight gain भी ज़्यादा नहीं रहता. और stress भी इसका. Stress is the inherent underlying part which nobody understands. ये किसी को पता ही नहीं चलता जब तक. सो मैं क्लिनिक में बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं होलिस्टिकली ट्रीट करूँ. मतलब मैं क्वेश्चन से ट्राई करती हूँ कि फाइंड करना कि ये स्ट्रेस इनको है नहीं है या फिर ये डील कैसे करते हैं स्ट्रेस के साथ. स्ट्रेस तो हर किसी को रहता है बट हम इसके साथ कैसे डील करते हैं वो अपना शरीर रिएक्ट्स टू दैट and how it presents itself. Then your amount of inflammation in the body. कोई भी बीमारी की जड़ inflammation है. So अगर inflammation is there, it will present in different ways. और अगर ये इतना कॉमन है यूएई में तो डॉक्टर रजुल क्या आपने ज्यादा देखा है, किस एज ग्रुप के पेशेंट्स जो हैं आपके पास ज्यादा आते हैं? So ये reproductive years में दिखते हैं. मतलब ये टीनेजर्स से लेके अच्छा right up to mid 40s भी मुझे दिखते हैं. So they are all, you can find PCOS in all reproductive years. Okay. So it's very important that you take a good history. मतलब जब भी पेशेंट आपके पास आए, ये जो मैं बोलती हूँ कि टाइम स्पेंड करना चाहिए पेशेंट के साथ बिकॉज यू हैव टू हियर द पेशेंट. वो क्या बोलते हैं वो आपको सुनने की ज़रूरत है. हम क्वेश्चंस तो पूछते हैं मगर अगर हम उन्हें सुनेंगे ही नहीं तो we will never know what's you wrong may with not them. reach to the root cause. Yes. And अगर ये untreated रहे तो क्या dangers हम face कर सकते हैं? So those patients are more at risk for diabetes in future, for metabolic diseases, for other lifestyle diseases. They can have all of these problems with PCOS being over there. So इसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा वो जरूर जानेंगे, बट देयर इज वन एस्पेक्ट का जहाँ आप स्ट्रेस लेते हो, देयर इज अनदर एस्पेक्ट जहाँ आप देते हो. डू यू आइडेंटिफाई दैट आल्सो? Yes, I certainly do. On a lighter note, wanted to ask you this part. Yeah. No, definitely. See, when you are a perfectionist at work, you always will seem stressful to other people because मेरा एक ही goal है in my workplace that my patient has to be treated as God. लेकिन डॉक्टर रजुल स्ट्रेस दे भी तो वही सकता है जिसके पास इन अबेंडेंस स्ट्रेस हो. जाहिर है आप वही दे सकते हो ना, खुशी और गम की तरह स्ट्रेस भी बांटो. लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये ना जीते हैं ना जीने देते हैं. एंड ऐसे में डॉक्टर रजुल जो हैं, सो यू नो व्हाट, इट्स लाइक कभी कभी हम अवेयर भी नहीं रहते कि हम कुछ चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में. सो इफ़ अ थर्ड पर्सन कैन सी दैट एंड मेक यू अवेयर ऑफ दैट एंड यू हैव टू हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू चेंज. और ये अगर चेंज आप बदलाव खुद में लाना चाह रहे तो अगर कोई आपको ये पॉइंट करता है इन द राइट वे, यू नो, तो नॉट बाय नैगिंग और नॉट बाय सेइंग आप गलत कर रहे हो, नहीं, इट्स अबाउट टॉकिंग द राइट वे. अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एक्चुअली वॉक आउट ऑफ माई डोर
happy just to talk to me. Oh, Nice. so it's not what you say, it's how you say it. Yes, I think that makes a huge difference. इमेजिन कि डॉक्टर राजल इतना अच्छा बोल रही है और इतने सुनने में कितना काम फील हो रहा है, जब वो सुनेंगी हमारी बातें तो और कितना और काम फील होगा आपको. That's right, this is just the beginning and this is the time. अगर आप भी या आपकी फैमिली में जो हमें सुन रहे हैं PCOS से रिलेटेड, क्योंकि वही टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ कन्फ्यूजन है, उसे आप क्लियर कर सकते हैं. इसके ऊपर और प्रोग्रेशन हुआ है डॉक्टर रजल, एंड कब एग्जैक्टली, बिकॉज पुराने ज़माने में जो हमारी मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, दे आर यू नो अलूव टू दिस टर्म एट वन पॉइंट. वो शायद कॉमन नहीं था या अवेयरनेस नहीं थी. Let me put it this way. There are so many intolerances to so many, because of environmental changes, because of food changes that have happened in the agriculture industry also. Yes. I truly believe, अभी मैं English में बात कर रही हूँ because ये थोड़ा, I'll try and explain it in Hindi. Gut health is something that is so important. मतलब अपनी जो अतड़ी है अपने पेट के अंदर, सही, ये अतड़ी में अपने साथ बैक्टीरिया जीते हैं. बैक्टीरिया, Good फंगाई, bacteria? गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया. अगर गुड बैक्टीरिया कम हो जाए या तो फिर बैड बैक्टीरिया बढ़ जाए, दोनों सिचुएशन में. ओके, इट डज नॉट मीन कि गुड कम हो गए तो बैड बढ़ेंगे. इट इज it's different, both of it. So दोनों सिचुएशन में गट डिसबायोसिस हो जाता है. मतलब ये बरोबर से मैसेजेस नहीं भेजते अपने ब्रेन को, एंड दीज बैक्टीरिया कंट्रोल योर इम्यून सिस्टम, they control your brain function, your hormones. तो सभी, तो ये तो इंजन ही हो गया एक तरह ये से. इंजन ही है अपना. और ये हम इसको खिलाते कैसे है, जो हम पेट के अंदर डालते हैं और जो हमें लगता है कि ये हेल्दी है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज हाउ न्यूट्रिएंट डेंस योर फूड इज. मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स आपके सेल तक पहुंचाता है. सो कई बार आपको ऐसे लगेगा कि ये खाना अच्छा है, ये and in our olden days, जब हमारे grandmothers, हमारे mothers, they never had all these problems because we didn't have a problem of genetically modified foods at that time. Correct. So this is one of the things that is a huge role that has played in the food industry. And we cannot follow that same path as well कि वो अगर सुबह एक चम्मच घी खाते थे, खाने में इतना घी खाते थे. No, but I recommend it. No, it's great. मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ही नहीं बोल रहा कि खाली घी. So if you च्यवनप्राश have, जैसे see, हो गया because and it's all those also things. about pesticides and it's also about chemicals in our life. So organic food खाना चाहिए हमें. So I don't recommend everything organic. It is not possible also. We are all budgeting on a daily basis. So we should have a balance. हर एक चीज में, even it's अपनी थाली is the best thing. If we go back to our Indian way of eating, it was a balanced meal. कि प्रोटीन्स भी हो गया, दाल भी हो गया, सब्जी भी हो गई, वीट भी हो गया. Yes. Right. And you may not have wheat allergies, but when you are intolerant because your gut is not healed, it does not mean you don't have to eat wheat all the time. You have to let your gut heal by eliminating or by adding foods, and then you can bring back other foods inside. Okay. So your inflammation has to heal first. Nice. तो ऐसे लग रहा है डॉक्टर रजल कि ज्यादातर, नॉट सारी, बट ज्यादातर बीमारियां जो है वो पेट से ही स्टार्ट होती हैं. ज़्यादातर. अच्छा, यहाँ पे हम I will just say one more thing here, Please. sorry. Please. कि मैं, I don't want to be misquoted. मतलब ऐसा ना हो कि कोई सच्ची बीमारी हो जाए तो that will have to be treated. I'm talking of general lifestyle. बिल्कुल, because Correct. this is how it Correct. starts. It Yeah. gets better or it gets worse. हम एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे और वो सवाल सबसे पहले पूछेंगे डॉक्टर रजुल से जो किसी ने विवेक से पूछा. This is Talk 100.3. कंटिन्यूइंग विद टॉक ब्रेकफास्ट ऑन टॉक 100.3. आपको याद रहे हर थर्सडे मेड स्टार से कोई ना कोई स्टार डॉक्टर हमारे साथ आती हैं. यूएई में जाना माना नाम डॉक्टर रजुल. इट्स अ प्लेजर टू हैव हर हियर वंस अगेन. डॉक्टर रजुल, वेलकम. एंड वो सवाल जिससे हम सारे ही, आई एम श्योर लिसनर्स भी जानना चाहते होंगे, कुछ ऐसा इंप्रेशन बना हुआ है कि लेडीज, क्योंकि सबने कभी ना लड़की नहीं पहले पूछा है तो- मुझसे. हाँ. कोई लड़के ने नहीं पूछा. ये जो 40 साल की लड़कियां हैं, ऐसा सुनने में आता है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, हाँ. हद से ज्यादा, जो उनके लिए भी बेकाबू और जो उसे झेल रहे हैं उनके लिए भी. तो क्या ये सच बात है डॉक्टर रजुल? और अगर नहीं तो प्लीज इस पे जरा फ्लड लाइट डालिए, टॉर्च लाइट नहीं. नहीं, मैं फ्लड लाइट ही डालूंगी. Nobody knows कि there is another hormone over there
एक हार्मोन है जो रियली कम हो जाता है मच अर्लियर, ये कोई मेजर भी नहीं करता. अच्छा. Progesterone, okay? There are two main hormones, estrogen and progesterone. Everybody features on the estrogen because you know that becomes less when you come closer to your perimenopause and menopausal age. True. But progesterone is the one that's responsible because when that becomes low, it creates problems of insomnia, it creates problems of estrogen dominance. Insomnia matlab रेस्टलेस स्लीप, रात को नींद नहीं आती, आप उठते हो बीच में, अगर आप सोओगे नहीं बरोबर से तो दैट विल ऐड टू योर चिड़चिड़ापन. ओके, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. देन there is high anxiety and low mood which is related to the progesterone being low. तो पहले मूड खराब होता है फिर आपका ये प्रोजेस्टेरोन and it is related. नहीं progesterone goes down because of your age and because of the hormonal changes that are happening in the body. Okay, तो इसके लिए proper खाना and everything, proper खाना, a lifestyle, as well as it is good to take bioidentical hormones if required, not the synthetic ones. Okay, those who have very severe cases, उनको ये bioidentical hormones are, I mean, we give them the choice of that, but I wouldn't give synthetic hormones because again, कोई भी चीज आप synthetic अगर खाते हो, I'm one of those doctors who has converted myself in my 32 years of practice. Okay, अच्छा. दवाइयाँ मैं बहुत कम लिखती हूँ because I believe that एक ही God has given us only one liver, वो liver ही has to detox your body. जितने chemicals आप अंदर डालोगे, whether खा के या whether apply करके अपनी शरीर पे या breathe करके, वो सब liver is the first line where the नेचुरल फिल्टर. Yes. और वो अगर sluggish हो जाए, slow हो जाए, तो आपके problems और बढ़ जाएंगे of digestion and other things. और ये क्या रेगुलर की जो हमारी डाइट है डॉक्टर रजुल, उससे भी हेल्प मिल सकती है अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन? Yes, you can change the way you eat. Exercise. It all makes a huge difference. How you sleep, stress कम करो. It's like a mixed thing. It's not like एक दवाई लिख दी for everything. And it's a you know, पहले अंदर से ये होना चाहिए कि मुझे ये चेंज करना है. ये अगर आपके माइंड में है तो आप कर सकते हो. आपने कौन सा हार्मोन कहा जो कम हो? प्रोजेस्टेरोन. सो नेक्स्ट टाइम अ गर्ल अगर गुस्सा होती है तो आई कैन ओपनली से दैट कि आपका प्रोजेस्टेरोन कम है. नो, यू कैन से आई लव यू. That makes a difference. आपको पता नहीं है कि he is married for कोई भी लड़की को मैं love you बोल दिया तो कोई भी नहीं. अगर मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर मैं ताली बजा रहा था, मैंने डॉक्टर राजुल ने खुली छूट दे दी है. ये तो मैं पार्टनर के बारे में बात कर रही हूँ. मैं यहाँ बैठ के नहीं बोलूंगी आप हर लड़की को जाके बोलो आई लव यू. वो तो इंतजार में बैठे थे कि कोई उन्हें ग्रीन सिग्नल दे. लेकिन खैर डॉक्टर रजुल, क्या ये सब महिलाओं को, सब लेडीज को एट एज 40 हो सकता है या ये सिलेक्टिव? It's few women who get it. अच्छा. Few deal with it better, so it's your coping ability of how you're see in the olden age. जैसे आपने मुझे पहले पूछा था, grandmothers, our mothers, they were all sort of independent. नहीं, you बोलते जैसे they were hands-on. They were made to responsible. बोलने दे उनको. They were tuned to adapt. Flexible हैं और flexibility. Yes. ये in the new generation we don't have that flexibility. Rebellious? और आप देखिए, not rebellious. It's because we have become more see, we are career minded. We know we can do something and we speak for ourselves. We don't want other people to speak for us. I would like to add here as well because you know, पहले ये था कि हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत आसानियां थी. अब ये न्यूक्लियर स्टाइल ऑफ फैमिली में सारे काम आप लोगों को यूजुअली करने होते हैं, लेडीज को हमें करने होते हैं. और मैं एक और चीज यहाँ बोलूंगी कि we women all seem to think we are super women when we are not. हम ना बोलना जानते ही नहीं है. करेक्ट. अगर नहीं कर पाते हैं तो we must ask for help. See, ये जो mental illness, mental health, ये सब जो deteriorate होता है, it's because we're trying to do too much and live up to whose expectation I don't know. जितनी ये हमारा खुद का expectation है कि हमको ये यहाँ जाके पहुँचना है करके. जितनी हमारी हेल्थ इजाजत दे उतना ही काम करना चाहिए. Absolutely. सारे काम हम कर रहे हैं, बाहर भी घर भी. और फिर अगर आप देखें कि सिंगल मदर्स हैं, वो तो फिर नेक्स्ट लेवल ही एक प्रेशर. And you know, if you start feeling कि you have this fear of losing out or like FOMO बोलते हैं, fear of missing out. Right, okay, right. ये जब भी लगने लगे तो you really
need to take a step back, breathe, and do something that makes you happy, that is not related to anything materialistic. And Dr. Rajul, सिर्फ missing out ही नहीं, that guilt, I'm not doing enough. Yes. वो ये कर रही है, आपकी कोई दोस्त या प्लीज मैं ये रियली बोलूंगी यहाँ, ये प्लीज किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें. हम अपने our education has changed. हमने जो सीखा था स्कूल में, we were competing all the time when we were younger. Our children are being taught to only compete with themselves. They are not being told in school that you need to compete with somebody else. Your First आना results, है. yes. Yeah. You compete with yourself. You make yourself better than what you were before. So this should apply to all the mothers also. And I think women are now competing, trying to compete. या बोलते हैं ना कि same status दीजिए men का, and then equality, वो सारा pressure आप डाल रहे हो, तो it becomes more. और यहाँ मैं ये भी बोलूंगी कि I'm not very much in favor of that, because yes, you give us the same status and everything. अच्छा, आप feminist नहीं हो मतलब? नहीं, not particularly, not completely. Humanist. I'm a with you, humanist, absolutely. Dr. Rajul. And why I'll tell feel you, we are made for something completely different. Absolutely. We are as unique as our thumb impression. Absolutely. And we bear children, and we take our pregnancies forward, which none of the men can do, and none of the men can understand what we go through at that time. Correct. So we have to treat ourselves differently. And now, as a husband, as a father, as a son, as the male in the family, I'm sure their responsibility, their role has increased. How can they take care of the women in their life? So I believe that education plays a big role, and I really do tell my patients also to teach their teenage daughters what to do so they can prevent diseases in future. But I also talk to them to let their teenage sons know how to respect women first. Nice. Because I feel we mothers are at fault if our sons don't turn out well. Actually, लेने के बाद माँ पर ही आनी चाहिए, because she's the one who has generally उन्होंने and raise it's किया the है. family structure and everything, but I think if we can start talking about it more families will become, they'll accept it and they'll listen to it more. And I also truly believe that today's men should know about the unique health concerns of women. Okay, some men don't understand only what the woman is going through. True, because they don't know, because they're not educated. Correct. So the base of everything should be that they should be educated. Most women, particularly those who put their husbands, kids, their family's health above themselves. Absolutely. Okay? They are the backbone of the family. Correct. If they fall or break, imagine what's going to happen to the family. Everything will fall like domino. Absolutely. And so the women who don't look after themselves, they particularly need husbands or partners or boyfriends to encourage and support them to look after their health needs. Self-love. Self-love, and to go and have their medical checkups, to have their yearly checkups if they have no complaints also. They should just be pushed, because a lot of women actually even come and say, no, I can't spend this money. Many times I've said, you see what you spent in a restaurant in the whole year. Put a sort of shopping maybe, Dr. Rajul. just do the restaurant, Only forget restaurant. the shopping, because that is something that's your luxury. Restaurant, you may want to go with your family and everything. I mean, if you even put 1/10 of that is not the amount you require for your yearly checkup. Since you have mentioned this, what is the right age so we can have these yearly checkups, Dr. Rajul? I'm sure many women from know. the teenage years. Acha. And why? Because teenage years don't require that much of checkups, but you can pick up diseases like polycystic ovaries early. Many people think it's okay, irregular period. Yes, for the first 2 years when the person starts menstruating, it's all right that their periods are irregular. But when you come in and counsel the child, see, the teenage years are very difficult. They're not listening to their parents. They're not, it's not that they don't love them, but they need guidance from somewhere else, because they're confused. And mood changes. So you can play that role of a guide, at that time. So once a year, if your teenager also comes and sees, then they know what to expect. Google does not become their master teacher then. True. For everything. Excellent advice. Yes. Yeah. And Dr. Rajul, आप अपना कैसे ख्याल रखती हैं? How do you remain that positive? I'm sure बहुत हद तक nature, personality type also adds to it, but मेहनत हर चीज मांगती है. No, so I'm not something special. You're super special. मैं हर किसी को बताना चाहती हूँ कि I did not take care of myself when I was younger. अच्छा. And that's the reason why
I want to make sure that everyone else, I can spread this message as much as I can, mainly to the younger, to the teenage, because they are our future. Okay? So to look after yourself, you just have to make yourself happy. And happiness, again, I'm saying, is not related to your materialistic things. I even say that find time to go for a manicure, pedicure. Find time to take a massage. Find time to go for a movie. Find time to see your friends at least once a week for coffee. So important. I find my vitamin F the best. I have some friends here that we have made it's not like friends I have back home. When I moved here as an expat, I miss my friends, my family the most. So you have to have that group that builds you up, Stress not buster. somebody who pulls you down. That's right. We women do this to other women a lot. So we have to change that. We have to pull up women. We don't have to pull them down. In fact, we got a question from Vijay quickly. His wife has got extreme level of stress level है, and जिसकी वजह से उनको pigmentation हो रहा है. So she started taking the meditation. Can you ask Dr. Rajul if this medication can be stopped? He's talking about the medicine Ruatine, Ruatine. So it's a controlled medicine, but his wife is taking, and pigmentation हो गया उनको. Okay, so I will say if it's because of the pigment, did she took the medicine and then She she is- got pigmentation? No. Because of the pigmentation, she's taking the medicine, right? Yeah. Now, if she has been prescribed this medication for the pigmentation, it's something a doctor will have to review and see. I'm not going to be able to comment on medicines. It's better that you get complete without knowing the details. whole history. Yes. But because we were talking of PCOS, one of the way insulin resistance presents as is dark patches on your neck, on your back. That's also It a can symptom. happen. Okay. Okay, so it's a good idea to have a complete checkup to know that if everything is okay before we can discuss Dr. this. Rajul, what is included in the complete checkup at, let's say 30 plus, Yeah. जो आप करवाते हैं, not the So- teenage? So when you come to the doctor, you should have you will have a complete history being taken, and then investigations just to see if all your routine, like your blood count and your sugar and your urine are all okay, because you can, many people think I don't have any urinary complaints, why do I need to do it? But it gives us a lot of information. Sometimes we pick up even asymptomatic bacteriuria. That means there is bacteria there without any symptoms. So it's necessary to do. Then it's necessary to do your lipid profile once a year. It's necessary to do your hormonal tests, Acha. like your thyroid. Okay, a lot of subclinical hypothyroidism is seen nowadays, where people have symptoms but they may not have their thyroid levels that low, and then diet changes, the way they function, other hormones are all interlinked. Okay. So it's definitely, and then your pap smear once a year Okay. for women who are over 21, just to make sure that everything's going well. And how they can get in touch with you through MedStar? MedStar has a call center, so it's 800-2233. Do you travel, Dr. Rajul, regularly, or आपका कुछ timings आपकी I am at schedule? MedStar 4 days a week. Okay. And I'm available all the time on phone. If they call and they say that they want to speak to the doctor, we always get back to them. I have a system where my nursing staff will get through to me and will tell me that a Can we patient wants to WhatsApp talk. you as well, Doctor? Yes, my patients can WhatsApp me. I'm always available. Dr. Rajul, you never say no, I think. Yeah, और आपने कहा कि 4 दिन आप काम कर रहे हो, so it's Only like 4 days. शारजा rule आप follow कर रहे हो, 3 days weekend. It's something Wow. I have chosen to do because, as I said, I'm giving myself a lot of self-love at the moment. nice. Fantastic, Dr. Rajul and Rajshri, आप के और हमारे बीच दीवार रहेंगे. दिल तो ये कर रहा है कि हर हफ्ते आपके साथ ये एक सेशन रखा जाए. I'm sure सुनने वाले लेडीज हो या जेंट्स, उन्होंने कुछ ना कुछ आज की इस बातचीत से सिर्फ हेल्थ इंकरेजमेंट ही नहीं, लेकिन एक जो मेंटल हमारी हेल्थ है, डॉक्टर रजुल, चलते चलते आपने उसमें भी बहुत हमें इंकरेज किया. Thank Can you we so enter much. the circle of your friends, Dr. Rajul, from today onwards? It would be nice. Absolutely. I thrive on friends, actually. क्या बात है, डॉक्टर सोबिया भी आ गई हमारे स्टूडियो में अब. नीम हकीम खतरा जान. वैसे आधे डॉक्टर तो हम बन गए, लेकिन हाँ, but actually
You have a doctor in your family, right? Yeah, my father homeopathic doctor, Right. and of course हर फैमिली में खैर वो होते हैं, तो वो बस हम जो हैं वो दिल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रजुल दिल का इलाज करते रहते हैं अपनी बातों से. But yes, we really mean it. Yes, Dr. Rajul, really appreciate your precious time, and Thank that you means so a lot. much, Sobia. I'm so happy to be here. Thank you, Vivek. medstarhc.com, medstar multi speciality on Instagram. यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं. 800-2233 पे फोन भी कर सकते जी, हैं. सीक्रेटली अगर हम डॉक्टर रजुल से पूछ लें कि सोशल मीडिया पे उनको कैसे फॉलो करें उनके हाँ. साथ. So I on Instagram I am known as Rajul_25, सही. and on Facebook it's Dr. Rajul Matkar. I also am on Twitter as well as Snapchat, but I'm not very Active. there. Fair enough. These are the popular sites nowadays, डॉक्टर. हम लोग भी इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हैं. टॉप 100.3. ट्विटर बहुत पॉपुलर होने वाला है एलॉन मस्क के बाद. Yes, खबरें जो हैं ये हम कहते रहते हैं, but hope to see you soon in good times, and perhaps even bad as well, because they will also turn into great times. Dr. Rajul, Thank you for having me here today. Thank you. I really appreciate this opportunity. Likewise.